Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथरे मु ऑलरेडी +2 सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु +3 CBCS ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज गुड़ा अपलोड करी जदि भल लगिला ताहले लाइक करदेव और सब्सक्राइब करदेव जो वीडियोज गुड़ा मु अपलोड करी तार नोटिफिकेशन पाई एठी बेल आइकन को ऑल रे सेट करदेव गोटे इंपोर्टेंट जिनस वीडियोज ऊपर एठी जो 3 डॉट्स देखुच तार क्वालिटी एठी देखो बाय डिफॉल्ट 360 अच्छी तुम ताकू बढ़े मध्य करिवो एठी एडवांस रे क्लिक करी तुम रिजोल्यूशन बढ़े पारिबो प्रति वीडियोज रे मु पीडीएफ लिंक देवी ताकू एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट रू तुम क्लिक करी डाउनलोड मध्य करि परिबो पीडीएफ को लास्ट रे एठी जो मोर चैनल नेम अछि याकू क्लिक करी तुम एठी प्ले लिस्ट को जाई मु प्रति वीडियोज को यूनिट वाइज एज पर सिलेबस सजाई की रखिथिबी तुम सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज रो टॉपिक रे हमें पढ़िबा अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द स्ट्रक्चर ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस। तेबे ये जो प्रॉपर्टीज अच्छी एटॉमिक न्यूक्लियस रो यार डिटेल आम वन बाय वन करी पढ़िबा जेमती कि सपोज न्यूक्लियर मास है, न्यूक्लियर साइज है, देन योर न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी, देन न्यूक्लियर फोर्सेस, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मैग्नेटिक मूवमेंट्स एटा वन बाय वन करी आम डिटेल यार प्रॉपर्टीज विषय रे आगो को पढ़िबा। सो देखो जेतेबेले एटॉमिक मॉडल कथा आछि then according to Rutherford the nucleus of an atom is very small in size and practically the whole mass and the whole positive charge of this atom is concentrated in this nucleus. It Rutherford कहले as per his atom model. Now the natural radioactivity एटा जदि आमे देखुछु it reveals that although the nucleus is compact, okay, बहुत माने पूरा बांधी ही रही थी न्यूक्लियसटा compact size रो थिबो, still then it is capable of emitting radiation. कौन से radiation ना अल्फा बीटा गामा रेज रे थ्रू radiation बाहरिबो. Therefore the structure of the atomic nucleus must be complex. Okay, so nucleus must be complex. Now the study of gamma rays जदि आम gamma rays को देखुछु then it has predicted discrete levels in the nucleus. तापरे study of beta decay जदि देखुछु from a nucleus then it has suggested that existence of another particle which is known as neutrino must be there as per beta decay. Okay, neutrino बोली गोटे particle रहिबा दरकार. अच्छा, जदि आम आर्टिफिशियल ट्रांसमुटेशन बा रेडियो एक्टिविटी आड़ को जाऊँ then it has predicted that the electrons, protons, neutrons and alpha particles all these are related to the constitution of the nucleus in certain ways or others. अच्छा, similarly जदि आम cosmic rays रो भी स्टडी करूछु ताहले it has demonstrated the existence of a particle known as meson. एटा elementary particles रे या विषय रे पढ़िबो डिटेल. So several theory एमती बाहरिछि which were put forward about the actual constituents of the nucleus. Nucleus actually रे केमती गढ़ा हिछि ता भितरे actual structure टा कोन ताकू नै कि गुडाए एमती theory प्रपोज करा जाइछि हैला, किंतु सेही भितरु जोटा मोस्ट प्रोमिनेंट से भितरु आमे दुईटा थ्योरी को पढ़िबा. फर्स्ट वन इज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड द सेकंड वन इज द प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरीटा तार किछिटा फेलुअर आसिला आ वर्तमान जाए प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरीटा एबे जाए मध्य लागू हेकी अछि. ओके, सो द फर्स्ट थ्योरी इज द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी. देखो बिफोर द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय चार्विक एटा एज्यूम करा जाउथला जे न्यूक्लियस भितरे प्रोटॉन आउ इलेक्ट्रॉन अछि आ एई कांसेप्टटा बेस करी कि थिला किछिटा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स ऊपर. नंबर 1 हला सम ऑफ द रेडियोएक्टिव न्यूक्ली एमिट बीटा रेज ड्यूरिंग देयर बीटा डीके प्रोसेस. आ ए जो बीटा रेज माने हमें बुझिबा दीज आर नथिंग बट द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड पॉइंट रे द फैक्ट दैट atomic weights of nuclei of different elements were whole number. है whole number बोले कि आम नौचु किंतु स्लाइड जो चेंज रोची whole number रू it can be explained by 2 or more isotopes. Isotopes means the nuclei
having same atomic number but different mass number. So the experimental results show that nuclei of different elements, you can regard them as a collection of integral number of hydrogen nuclei. Okay, so the nucleus of hydrogen has a positive charge and whole magnitude is equal to that of electron, and this is known as proton. ତେଣୁ proton और electron ର magnitude समान किंतु charge अलगा अलगा. proton positive charge, electron है negative charge. So according to proton electron theory, it was assumed that the nucleus of the atomic mass number, which is A, and atomic number Z contains A number of protons. Okay, thus charge on the nucleus would be equal to A, which is the atomic weight, and not equal to Z. Okay, the value of Z is half or less than half of the atomic weight A. Okay, so ये जो difficulty आसिला, it was overcome by assuming that in addition to protons, the atomic nucleus contains A minus Z number of electrons. Okay, A minus Z number of electrons nucleus भितरे रहुची, so that the charge on the nucleus now becomes equal to plus Z. Okay, since the atom as a whole is neutral, hence it was proposed that the nucleus having A number of protons and A minus Z number of electrons, it is also surrounded by Z number of extra nuclear electrons. Okay, nucleus रो बाहर Z संख्यक electrons अच्छी आ nucleus रो भितरे A minus Z संख्यक electrons अच्छी बोली कि कहा गला. So the number A is called the mass number. है example, जदि suppose आमे गोटे nitrogen atom नेबा, then it has atomic mass 14 and atomic number 7. Okay, then it was supposed to contain 14 number of protons and 14 number of electrons, out of which 14 protons and 7 electrons are packed inside the nucleus. mane rakho, our remaining 7 electrons are revolving around the nucleus as per the proton electron theory. Okay, various orbits रे এই इलेक्ट्रॉन गुडा न्यूक्लियस चारिपटे रिवॉल्व करूची, किंतु এই प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी रे फेल्युअर देखा गला. फर्स्ट फेल्युअर जोटा एज पर वेव मैकेनिकल कंसीडरेशन इज द रीजन फॉर नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. सेटा आगो प्रथमे देखिबा नंबर 1 रे. सपोज इलेक्ट्रॉन गोटे एक्जिस्ट करूची इनसाइड द न्यूक्लियस, ताहले एबे कोन हो, अनसर्टेनिटी in position of that electron becomes equal to the diameter of the nucleus. Simple. Then the size of the nucleus ame janichu it is of the order of 10 to the power minus 14 meter. ताहले आमे diameter को पाखा पाखी नहीं परिबा 10 to the power minus 14 meter, which is nothing but the uncertainty in position of the electron which is inside the nucleus. Suppose जदि आमे assume कला, ताहले ए uncertainty in position delta x को आमे लिखि परिबा as equal to 10 to the power minus 14 meter. हला. Now, according to Heisenberg's uncertainty principle, the product of uncertainty in position and momentum delta x delta px is greater than or equal to half h cross. h cross माने h by 2 pi. Okay, एठी delta px हेगला uncertainty in momentum आ h हेगला तमरा Planck's constant. Okay, so एबे delta x delta px रो वैल्यू आमे लिखि परिबा as h by 4 pi or delta px is equal to h by 4 pi into 1 by delta x. Suppose आमे momentum of this electron याको आमे nearly equal to its uncertainty नहीं गला, p equal to delta px नहीं गला, ताले p रो वैल्यू हे गला h by 4 pi into 1 by delta x. Okay, now as per the theory of relativity, the energy of this electron, as it is a moving electron, so E equal to square root of m0 square c4 plus p square c square. Like m0 hegla rest mass of this electron. Okay, and since
this first term m0 square c4 is very less than p square c square, तेणु करी आम या नेग्लेक्ट कर एज कंपेयर टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तेबे एनर्जी एवं केते स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर और सिंपली ई इक्वल टू पी सी आमर रिजल्ट आसीगला। ओके, एबे जदि पी रो वैल्यू आम पुट करदेला एच बाय 4 पाए डेल्टा एक्स इंटू सी, एबे जो रिजल्ट रे रेस्पेक्टिव वैल्यूज आम पुट करवा। एच प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू पुट करदेला, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन पाए 3.14, डेल्टा एक्स को आम नीचु ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर साइज विच इज द डायमीटर 10 to the power -14 मीटर। सो यही सब वैल्यू को पुट करदेला परे आम एबे जदि यार कैलकुलेशन करवा ताहले एनर्जी ई शेष को आसीबो पाखापाखि 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दैट मीन्स that if electron exist inside the nucleus, then their energy must be of the order of 10 million electron volt। है इटा हूँ theoretical as per uncertainty principle। However, during beta decay of radioactive nuclei, the emitted electrons, which are nothing but the beta particles, fast moving electrons जोटा, they have energy only ranging from 3 to 4 million electron volt। है सो एक्सपेरिमेंटली देखागला जे ई इलेक्ट्रॉन रो एनर्जीटा 3 ରୁ 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भितर ही सीमित रोचे। हेंस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट एक्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। तेणु यही जगार प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरीटा फेल मारिला। सेकेंड पॉइंट रे भी आम जदि कंसीडर करवा स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, ताले देख इलेक्ट्रॉन आउ प्रोटॉन ए दुईटा जाकर स्पिन एंगुलर मोमेंटम वैल्यू हाफ एच क्रॉस हुए। है सपोज गोटे न्यूक्ली अच्छे एंड इट इज हैविंग प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एज पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अच्छा, सम ऑफ दिज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जदि एटा इवन नंबर आसिला ताले यार ए न्यूक्ली रो टोटल स्पिन एबे इंटीग्रल वैल्यू हबो। सिमिलरली सम ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जदि ऑड नंबर आसिला ताले एबे टोटल स्पिन ए न्यूक्ली रो हाफ इंटीग्रल स्पिन हे जिवो। ओके, बट द न्यूक्लियर स्पिन एंगुलर मोमेंटम is against the proton electron hypothesis। how देखो एज पर दिस hypothesis जदि आम कंसीडर करवा फॉर एग्जांपल बेरिलियम न्यूक्लियस 4Be9, ताहले इट कंटेन 9 प्रोटॉन्स एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स। सो टोटल पॉजिटिव चार्ज जदि आम यार बाहर करवा 9 - 5 है कि 4 एलिमेंट्री पॉजिटिव चार्जेस हो गला। है ओके, सो each proton and electron जेहेतु आम जानिला यार स्पिन होची हाफ एच क्रॉस, therefore total spin of the nucleus containing 14 particles which is 9 protons and 5 electrons, एटा हला इवन नंबर, तेणु करी it is an integral spin, it should be an integral spin nucleus। किंतु देखा जाए जे ये जो बेरिलियम न्यूक्लियस अच्छी इट हैज हाफ इंटीग्रल स्पिन which is against the proton electron theory। hence we can say that electrons do not exist inside the nucleus। यही जगह भी proton electron theory फेल मारिला। थर्ड पॉइंट रे सपोज आम स्टैटिस्टिकल कंसीडरेशन नेला, पुणी से कथा स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यार वैल्यू हाफ एच क्रॉस, ताले बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आम जानिचु एटा होची फर्मियंस। Fermions means obeying the Fermi-Dirac statistics। So if electrons exist inside the nucleus as per proton electron theory, then suppose for example nitrogen nucleus आम निकला 7n14, then it should have 14 protons and 7 electrons। Therefore the nitrogen nucleus containing 21 particles, that is 14 protons and 7 electrons, it should have the resultant spin which should be half, that is it should obey the Fermi-Dirac statistics as per proton electron theory। किंतु as per study it has shown that the nitrogen nucleus obey Bose-Einstein statistics, showing that electrons again do not exist inside the nucleus। এই জায়গায় भी proton electron theory fail हला। next fourth point रे मैग्नेटिक मूवमेंट को आम देख कंसीडर करवा। सो एज पर मैग्नेटिक मूवमेंट इफ न्यूक्लियस कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, देन मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस शुड बी
of the same order as the electronic Bohr magnetron jar value mu b equal to E h cross by 2 me ampere meter square. Ethi me heigala mass of the electron, but it has been found that the nucleus having actually the magnetic moment which is defined by the nuclear magnetron mu n, which is E h cross by 2 mp hegala mass of the proton. Okay, so this much of ampere meter square. So this value mu n is actually 1 by 2000 times of the electronic magnetron. So this is also against the proton electron theory. Point number 5 रे आस ये कहला finite size of electron. देखो जदि आमे heavy nuclei नौचु ताले एठी number of electrons required will be large to make the atoms neutral हैला कहीं बिकज न्यूक्ली जिते हेवी हेबो से भितर प्रोटॉन संख्या सेतकी बढ़ी जिवो तेणु करी इलेक्ट्रॉन भी सेतकी बढ़िबा दरकार in order to make it neutral. So if the electron has a definite size and spherical in shape, then the existence of large number of electrons in the nucleus will make the dimension of nucleus much bigger. Okay, nucleus ro dimension टाको electron रो जो large number of electrons तारो dimension टाको बढ़े देबे. Then experimentally the measured values which is in contradiction to the observed facts, तेणु यही जगार भी तुम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरीटा contradiction आसिला एथिरे फेल्युरिटी देखागला. लास्ट पॉइंट रे वेवलेंथ को जदि आमे कंसीडर करूछु the de Broglie wavelength which is associated with an electron, it is found to be larger than the measured dimension of the nucleus. Therefore it is also against the possibility of this proton electron combination. So ei sabu point ru ei jinsota last ko result bahla je proton electron theory ta actually failurity देखागला. तेणु करी ताको ओवरकम करिकी नेक्स्ट सेकेंड थ्योरी आसिला द प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी. लेट अस सी दैट. सो जेमती कहली द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाज डिस्कार्डेड और रिजेक्टेड ड्यू टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स. अच्छा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जोटा कि से गोल्ड रो थिन फॉइल ऊपर नहीं करथिले. देखो ये जो अल्फा पार्टिकल गुड़ा स्कैटर्ड है फ्रॉम द एटम्स, इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज which are nothing but the protons in the nucleus and non-existence of electrons inside the nucleus. So Chadwick jete bele discover kale which is a new particle known as neutron during the experiment when alpha particles were bombarded on beryllium. ताले एठी देखो यार रिलेशन रिएक्शन टा एटा आसिला बेरिलियम संगे गोटे अल्फा पार्टिकल. So that result बाहरला carbon plus neutron along with some energy which is Q value. So एठी 0 and 1, this is nothing but the neutron, and the neutron here is having a mass which is nearly 1.67 into 10 to the power minus 27 kg. आउ ता सहित एटा होची न्यूट्रल, यार चार्ज किछि नहीं, इट इज ए न्यूट्रल पार्टिकल सो दैट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स. So it has very high penetrating power. Okay, so with the discovery of neutron, the set of nucleus has changed, and Heisenberg he proposed that the presently accepted proton neutron hypothesis जोटा कि एबे मध्य चालू अछि हैला, that according to his hypothesis Heisenberg's theory हिसाब रे every nucleus consists of protons and neutrons and the sum of the protons and neutrons is equal to the mass number of that nucleus. आ atomic number z हेगला तमरा total proton संख्या. Okay, which is giving you the net charge which is the product of z into E of the nucleus. Okay, so the total number of neutrons यदि हमें देखिबा it is simply n equal to a minus z. Okay, so गोटे न्यूक्लियस रे a minus z संख्यक न्यूट्रॉन्स थाए, or you can say that simply a equal to n plus z, that is
the mass number of the nucleus is equal to the sum of the number of neutrons and protons which are present inside the nucleus. सो किछिटा फैक्ट्स जोटा कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी को सपोर्ट मध्य कला तेणुक एबे जाए सेटा कायम अच्छी फर्स्ट है द वेव मेकानिकल कंसिडरेशन जमती आम पूर्व केस पढ़ुला देख जदि आम गोटे प्रोटॉन नौचु कि न्यूट्रॉन नौचु which exist inside the nucleus then as per uncertainty principle यार uncertainty in position हो न्यूक्लियस डायमीटर सहित पाखापाखि सामान अच्छा सिंस द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power minus 14 मीटर तेणुक आम लिखिपर एज डेल्टा एक्स which is nearly equal to 10 to the power minus 14 meter the uncertainty in position of proton or neutron. Now apply करिबा uncertainty principle delta x delta px जेमती ऊपर करथिला is greater than or equal to half h cross and let us say that याकू आमे नियरली इक्वल टू हाफ एच क्रॉस नहीं गला ओके ताले डेल्टा पी एक्स हो एच बाय 4 पाए डेल्टा एक्स ओके तेणुक अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को आम जदि इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं गला ताले पी इक्वल टू डेल्टा पी एक्स गला और सिंपली पी इक्वल टू एच बाय 4 पाए डेल्टा एक्स गला एबे रेस्पेक्टिव वैल्यूज आम जदि पुट करवा प्लांक्स कांस्टेंट आउ ये जो तुमर डेल्टा एक्स विच इज द न्यूक्लियर डायमीटर ताले रिजल्ट केते आसिला पी रो वैल्यू 0.527 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20 kg पर मीटर पर सेकेंड ओके सो रेस्ट मास जदि प्रोटॉन किंबा न्यूट्रॉन रो आमे देखुछु इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg आ वेलोसिटी सिमिलरली पार्टिकल रो हो केते ना p बाय mp सो रेस्पेक्टिव वैल्यूज आम पुट करदेला वेलोसिटी पाखापाखि आसी जाउची 3.15 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड हेन्स इट इज अ नॉन रिलेटिविस्टिक केस है अच्छा जदि काइनेटिक एनर्जी आम सिमिलरली यही पार्टिकल बाहर करचु ताले p स्क्वायर बाय 2mp है रेस्पेक्टिव वैल्यूज आम पुट करदेला जोटा पाइछु तो रिजल्ट आसला केते 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी रे यही एनर्जीटा केते आसला एज पर रिलेटिविस्टिक केस है एठी प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी नॉन रिलेटिविस्टिक आसला किंतु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रे रिलेटिविस्टिक आसला सो सेठी एनर्जीटा पाखापाखि टोटल एनर्जी 10 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसला जोटा कि कॉन्ट्राडिक्ट करथिला किंतु एठी टोटल एनर्जीटा 52 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसला सो द एमिटेड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाय the nucleus carry energy which is greater than 52 kilo electron volt hence the proton and neutron can exist inside the nucleus है सो एठी जेहेतु काइनेटिक एनर्जीटा ठीक तार रेंज रे पळे आसिला तेणु आमे एई थ्योरी वेव मेकानिकल ट्रीटमेंट कहिला जे यस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैन एक्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस सेकेंड पॉइंट रे भी सिमिलरली आमे जदि कंसीडर करिबा द स्पिन एंगुलर मोमेंटम देख प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन दुई जनकर स्पिन होगला हाफ और हाफ एच क्रॉस देन अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन न्यूट्रॉन हाइपोथेसिस न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हेन्स रिजल्टेंट स्पिन होगला ए न्यूक्लियंस सो न्यूक्लियंस माने प्रोटॉन आउ न्यूट्रॉन ए दुईटा जाको आम न्यूक्लियंस बोलिकी कहू है विच विल बी एन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस फॉर ऑड नंबर है जदि ऑड संख्यक टोटाल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अच्छी ताले हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस हो सिमिलरली जदि गोटे न्यूक्लिय अच्छी से आम जदि इवन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस नेला ताले इट शुड बी एन इंटीग्रल और जीरो स्पिन है विच इज इन एग्रीमेंट विथ द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हेन्स दिस थ्योरी ऑल्सो रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ न्यूक्लियर स्पिन एंड सपोर्ट द न्यूक्लियर model of proton and neutron hypothesis okay 3 number रे magnetic moment consideration देखो the observation have confirmed that the magnetic moment of proton and neutron are of same order of magnitude and equal to the nuclear magnetron so एटा भी ठीक आसिला
है म्यू एन इक्वल टू ई एच क्रॉस बाय 2 mp जहाँ और ई एच क्रॉस बाय 2mn से पाखापाखि एका आसब कहीं बिकज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रो मास टा नियरली इक्वल सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेट्रॉन एटा भी सपोर्ट कला 4 नंबर पॉइंट रे फाइनाइट साइज देख मास जिते आम देखुचु गोटे न्यूट्रॉन रो इट इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन जमती कहली ऑल्सो the sum of the number of protons and neutrons which are present inside the nucleus is equal to the mass number. Hence, it is not difficult for the nucleus to have neutrons. So, it is support kala. Next, point number 5 re beta decay. Hala, it is important. Dekho, the study of beta decay, it has shown that electrons do not exist inside the nucleus. It I already ऊपर discuss कला, but they are produced during the radioactive disintegration. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस भितर नहीं सीना किंतु जेतेबेले बीटा डीके होउची हैला और रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन होउची ताहले एबे इलेक्ट्रॉन से भितरु रेडिएट होउची सो एटा केमती होउची ताकू बुझेया पई हमें एई दुईटा रिएक्शन को बेस करिकी याको एक्सप्लेन करि परिबा फर्स्ट गोटे न्यूट्रॉन को हमें भांगी परिबा एज the sum of proton and electrons along with an anti-neutrino. Similarly, गोटे proton को आमे भांगी परिबा as the sum of neutron and positron along with a neutrino. एठी न्यू हेगला न्यूट्रिनो न्यू बार हेगला एंटी न्यूट्रिनो सो ए हिसाब रे बीटा डीके को आमे जस्टिफाई करि परिबा बाय टेकिंग द प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी ओके लास्ट रे द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स देखो this proton neutron theory will lead to a more refined classification of elements as below. Number 1 এটা তুমি প্লাস 2 রে পড়িছো isotope মানে these are the nuclei having same atomic that means the proton number z but different atomic masses mass number a हेतिरे अलगा सो एठी ऑक्सीजन रो दुईटा आइसोटोप अछि सो देखो दुईटा जाक ऑक्सीजन रो तळे 8 8 समान प्रोटॉन संख्या अछि z is equal to 8 किंतु 16 गोटे अच्छी 17 गोटे अच्छी मास नंबर सो दीज आर टू isotopes of oxygen so the isotopes of an element contain same number of protons different number of neutrons all the isotopes of an element have identical chemical properties but they differ physically only in masses okay second thing the isotone माने these are the nuclei having same neutron number n for example एठी कार्बन और नाइट्रोजन रे एठी देखो न्यूट्रॉन नंबर कहले हमें जानिछु it is equal to n is equal to a minus z so 13 minus 6 is equal to 7 एथिरे मध्ये 14 minus 7 is equal to also 7 so both have 7 number of neutrons these two are isotones third one is the isobar these are the nuclei having same mass number है माने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स जोटा बट दे डिफर इन द एटॉमिक नंबर पुणी देख कार्बन आउ नाइट्रोजन रो एठी पुणी एग्जांपल देखिबा एठी देख ऊपर 14 अछि कार्बन रो भी आउ नाइट्रोजन रे भी 14 अछि समान मास नंबर किंतु एटॉमिक नंबर कार्बन रे 6 अछि नाइट्रोजन रे 7 अछि सो दे बोथ हैव same mass number a equal to 14 z equal to 6 in carbon and z equal to 7 in nitrogen okay these two are isobars 4 number re isomer these are the atoms which have same atomic mass a and also same atomic number z but they differ from one another in their nuclear energy states okay they also exhibits differences in their internal structure and they have different lifetimes nuclear energy states रे एमानकर डिफर करंती हैला ता सहित अलगा अलगा इंटरनल स्ट्रक्चर सेमानकर रही थाए आ लाइफ टाइम मध्य तांकर अलगा रही थाए सो दीज आर नोन एज आइसोमरिक न्यूक्ली फिफ्थ पॉइंट रे द मिरर न्यूक्ली सो दीज आर द न्यूक्ली हैविंग सेम मास नंबर बट विथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर इंटरचेंज्ड माने गोटे न्यूक्ली रे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जहाँ थिबो ठीक तार मिरर न्यूक्ली रे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या थिबो एंड वाइस वर्सा दीज टू आर नोन एज मिरर न्यूक्ली फॉर एग्जांपल एठी देखो बेरिलियम रे एठी चारिटा
प्रोटॉन अच्छी आ 3टा न्यूट्रॉन अच्छी किंतु एठी सिमिलरली लिथियम रे एबे ठीक तार उल्टा 3टा प्रोटॉन अच्छी आ 4टा न्यूट्रॉन अच्छी सो दीज टू आर मिरर न्यूक्ली ओके सो आमे लास्ट रे एई कंक्लूजन रे अराइव करला जदि आमे पढ़िला द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस रे दुईटा आमे थ्योरी देखिला गोटे हैला प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो थरे कि फेल्युअर जोटा हैला बहुत किछि सेथिरे कॉन्ट्राडिक्शन देखा गला हैला ताकू पुणी मॉडिफाई करके प्रोटॉन न्यूट्रॉन थ्योरी डेवलप करा गला जोटा कि एबे पर्यंत चालू अच्छी जोटा कि एबे पर्यंत एक्सेप्टेबल बोले आमे कहि परिबा एज फार एज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज कंसर्न्ड ओके थैंक यू